The Blueprint Explosive Exclusive. I'm Madhav Das Gopal. All our viewers a very happy Independence Day. Viewers, the presence today of LOP in Lok Sabha, Rahul Gandhi, was very significant on the 78th Independence Day as the event saw an LOP after 10 years. However, the event was marred by controversy over Rahul Gandhi's seating arrangement. As per protocol, the LOP is equivalent to the rank of a cabinet minister and is always given a front row seat in the Independence Day event, says the Congress party. While today, Rahul was seen in the second last row with the Olympic champions. Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, Union Ministers Nirmala Sitharaman, Shivraj Singh Chauhan, Amit Shah and S. Jaishankar were seated in the front row. Soon chatter erupted regarding this seating position of Rahul Gandhi, and while Congress has slammed the BJP government and Prime Minister over the seating arrangement, saying that Rahul being given a seat in fifth row shows the politics being played by BJP government. Congress has cited past precedents where BJP was in opposition and was given front row seats. On the other hand, BJP's countered the argument and cited past precedent where Sushma Swaraj and Lal Krishna Advani were seated behind cabinet ministers. नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया। वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया संसद में। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत जी के साथ जब मंत्री था तो मैंने देखा था सोनिया जी भी फ्रंट रो पे नहीं थी। और जब बीजेपी के भी विपक्ष के नेता थे, सुषमा जी, आडवाणी जी, तो उनके क्या फ्रंट रो में सीट मिलती थी। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद रैंक है तो उनको सीट मिली, इसमें कहाँ कोई एतराज़ है। इतनी सी बैठने के लिए मेरी सीट आगे कि पीछे। जनता ने तो आपको 5 साल तक विपक्ष का नेता बनाया है और फिर सरकार के बाद आपको बैठना है। इसमें कौन सा विवाद खड़ा कर रहे हैं कांग्रेसी। Meanwhile, sources in the Ministry of Defence, which is responsible for the arrangements that are made for the Independence Day event, have said that Rahul Gandhi was given a seat in the front row as per protocol, but he himself chose to sit with the Olympic champions. Let's take this across to Pragya, who's joining us. Pragya, very interesting to see the kind of political war of words, because now the Ministry of Defence clarifying that Rahul was given a front row seat, but he's the one who chose to sit behind with the sportspersons, with the Olympic champions. Well, Madhav, this is the official stand that is coming from Ministry of Defence, that it is Rahul Gandhi who chose to sit with the players. In fact, and there are other sources in the government also who were saying that, there is a category of ministers like cabinet minister. They sit in second, third, fourth row, and which is why Rahul Gandhi was also given that row. But because they had to accommodate the players who had come from the Paris Olympics, they had to be adjusted, and this is why Rahul Gandhi had been given seat among them. And he was not sitting behind any BJP minister. He was sitting with the players. This is the stand that government has come up with, and saying that it was not intentional. It was the sitting arrangement, and he was giving his due. So, Defense Minister, the Ministry of Defense has already said that it was Rahul Gandhi who chose to sit with the players and not among the ministers as well. They all know that he, as an LOP, gets
privileged to have a same equivalent sitting arrangement as that of any cabinet minister, and he was given so. Okay. So a very very interesting. Very interesting. from the Totally different versions coming in from each side. Pragya, that's a story we'll continue to track.